सेकेंड वेव रे आम देखिलु जे आमर माने एते ऑक्सीजन लेवलटा एते जल्दी पेसेंट कमीगला सेटा आम स्ट्राटेजी आम बहुत पेसेंट को बंचई दे पारलु सेते भी पेसेंट संख्या बहुत बढ़ीगला आम 5टा टेंट करलु से 5टा टेंट रे आम आमर कोविड टेस्टिंगटा आरंभ करदेलु आमर देखिलु आमर एठी पर डे एक्चुअली बर्तमान कोविड टाइम रे टिके कम पेसेंट थिले बर्तमान किंतु आमर पर डे अराउंड 2500 आउटडोर पेसेंट आमर गोटे मैंडेटरी होती पेसेंट आप ओपीडी देखा माने जहाँ हेले कोविड प्रोटोकॉल मानिब आ कोविड टेस्टिंग हम तेणु कोविड टेस्टिंग आमर ओपीडी आईपीडी आम बर्तमान खाली एत लोकंर एठी करें पर डे कह गले आम अराउंड 500 टेस्ट ये करुचु। लोक आउ जो भितर बसिकी लाइन में बसिकी भितर जहाँ टेस्टिंग करने जेकोसी रूम भितर से गोटे क्राउडनेस होता लोक मान भल लगुन भी भितर बसिकी गोटे ये बर्तमान लोक मान बहुत भल लगुच जहाँ बाहर आसिकी गोटे माने लगुच जमती आम परिवेश भल परिवेश भितर टेस्टिंगटा आमर करुचु तेणु लोकंर आउ किसी कंप्लेन ना। आपण माने एटा जोड़ा देखुछंदी एटा होची कोविड टेस्टिंग रूम 2 सेकंड राउंड द क्लॉक आमर टेस्टिंग चलची सकाल 24 आवर्स आमर टेस्टिंग चलची ए रूम टारे आमे रखिछु ऑब्जर्वेशन रूम आमर टेस्टिंग भितरे होउथला जोठी आमे कोविड प्रोटोकॉल टा मानि पारु नथलु किंतु जहा एठी आमर टेस्टिंग रे दीटा टेंट कलु गोटे टेंट रेस्ट रूम कलु। आगुरी मत जो फीवर होता बालेश्वर मु बालेश्वर मेडिकल हेडक्वार्टर जाइली और सेठी सब कोविड कौन विशेष फैसिलिटीज नाला जो द्वारा से मत डाउट कर ट्रांसफर करते भुवनेश्वर और सेठी दीर्घ मसे काल मु ट्रिटमेंट है आठी मु भल होगी पुणी बालेश्वर फेरी या मध्य बालेश्वर बहुत उन्नति फैसिलिटीज बालेश्वर एवेलेबल है मझे जाइली मु देखुली जे भितर आउ किसी ना बाहर स्पेशल पूरा सेपरेट कर दिया कोविड पेसेंट मान जोटी बहुत सुंदर फैसिलिटी मिलूची एवं भल ट्रीटमेंट होउचंती। The Odisha state government set up auxiliary health facilities in 7 sites in Balasore district in June 2021 to provide uninterrupted COVID-19 and other essential health services during the second surge in India. 11 auxiliary health facilities serving a cumulative population of 250,000 have been set up in 7 sites. These blocks, a cluster of around 300 villages, were selected because they had a COVID-19 test positivity rate of over 10%. पॉजिटिव पेसेंट आम ये बसौचु ये वेट कर डॉक्टर को देखा देन से जाकि डॉक्टर को देखा डॉक्टर सेपटे बस डॉक्टर देखला जो मानकर माने एडमिशन दरकार हो आडमिट अदरवाइज से माने मेडिसिन देकी घर को पठा जाउछि। मो नाम जाग्यसेनी पुष्टि मु बालेश्वर आसी मो छाती पेन होतबारु डॉक्टर कही जे रिपोर्ट माने आर्टिफिशियल रिपोर्ट नहीं जाइबा पई कहि। AHFs have brought treatment and care closer home in a district vulnerable to floods, cyclones, storm surges and heat waves. When Cyclone Yas made landfall in Odisha on 26th May 2021, the state government established AHFs in remote coastal areas that were severely affected by the cyclone.
From day one, I would say it was a teamwork where all the line departments, including WHO, we all came together and we were able to use this tent facility for multi-dimensional purpose. These tent facilities not only provided COVID facilities or testing facilities, but during the time of disaster also we were able to put these tents in the best possible use. People had taken shelter in these multi-purpose tents. I would say that these tents have actually saved many lives. मत कोविड पॉजिटिव है किंतु मो हॉस्पिटल एडमिशन नहीं कि घरे माने घरे रही कि मु ट्रीटमेंट हेली आउ मु बर्तन पूरा रिकवरी हो जाइए मु पूरा भल अच्छी आउ मु फास्ट डोज नहीं आउ सेकेंड डोज बहुत भिड़ होगा डाक्तरखाना जो तंबू पकाई मुझे जाकि मो वैक्सीनेशन दुईटा मोर क्लीयर कर देछि। आमको दरकार थिला एमती गोटे जगह जोटा कि आम बहुमुखी मल्टीपर्पज हिसाब से व्यवहार करूँ सेमती जगह भी आज आमको मिली जो जगार कि आम दिन 9टा पर आम कोविड वैक्सीनेशन करुचु एनसीडी स्क्रीनिंग जोटा कि आमर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज डायबिटीज और हाई प्रेशर तार स्क्रीनिंग करुचु ये आम सेक्टर मीटिंग करुचु आपणकर फीवर क्लिनिक करुचु ये आपणकर जीक एलटी टेस्ट परफॉर्मेंस भी आम करूँ कौन सी लोक साधारणतः गाँ गहली आसिले आम ताकू बसई पारुचु। Second surge which is going on and we are having large number of cases and large number of deaths. To tackle this, the district has already set up several CHCs and DCH at the district headquarter level. But at the periphery, infrastructures are not that good. These are really very useful because these are now being used for testing as vaccination sites. At the grassroots, what we now find is there is a fear among people regarding the disease. So this is having a great impact on the community. The institution heads, they are very thankful also for this AHFs which has been provided. এখানে এসে সুরক্ষা থেকে এখানে ওষুধ ফল দিয়ে কোভিড টেস্ট থেকে ওষুধ নিচ্ছি খেয়ে ভালো হচ্ছি। Frontline workers, called ASHAs, are playing a critical role in expanding the vaccination outreach and spreading the word about the services available at the AHFs. एबे आउ सेमिति असुविधा नाही जेबेठु तंबू पड़िलानी बसिबा पई भी सब सुविधा अछि कि योग क्लास होउची टीकाकरण होउची समस्त भी जाई कि बहुत खुशी मो एरिया लोक समस्त भी बहुत खुशी ए जे हमर तंबू पड़ला पीएससी रे भगराई पीएससी रे तमे जाई सेठु नै छ नबा पई किछ असुविधा लेन तो सब सुविधा है आसीला एलान कले कि जाइकी फिडर स्कूल रो टेस्ट समस्त का हबो जाओ तापरे केते दिन परे तार खबर आसीला जे ताकू पॉजिटिव बाहरी छी पड़ी छी प्रथम दिन हम नै छी हमर फर्स्ट नै तंबुरो नै छी बाबा। These auxiliary health facilities are of very helpful. Introduce them in some of the districts in our state to see how they are effective during this period for surge management for purpose that this can be utilized in future. It can be carried to any area that requires such facility because as you know the Odisha is a traditional state with disasters. Every year we get cyclones and during cyclones we have large scale shifting of people. We evacuate people from these prone areas to nearby cyclone shelters, schools and all. This includes mothers, children, then high risk people, patients.
So what we require is again in the post-cyclone period, we required their medical centers, we required some center to take care of the pregnant women, some center to take care of the children. They are in the evacuated camps. And these being shift arrangements with logistic and manpower can be shifted to any place. AHFs are serving the communities closer to their homes with the collaborative efforts of the health workers, State Health Department and WHO team. The state government has plans to replicate the model to provide health services during emergencies and natural disasters. The auxiliary health facilities or temporary health facilities proved to be highly valuable assets in augmenting the surge capacity in 51 sites in 6 states. These are being used as fever clinics, vaccination sites, testing centers, supporting health service delivery flexibly. 3 other states have received and stored them for readiness for future waves of the pandemic or for emergencies from various hazards. The lab supplies are being used to ramp up testing and surveillance at both the national and state levels. We really look forward to continued partnership with the EU humanitarian aid to build resilient health systems in India that can withstand shocks of emergencies to continue providing health services for everyone, everywhere, every time. The surge response wouldn't have been possible without the invaluable support of health workers and frontline workers who work 24/7 to take services to the people. AHFs are empowering the health workforce by providing the tools they need to do what they do best: protect health and save lives.